Hello friends, how are you all? Okay, here you go. Sorry friends, वो पिछली वीडियो में जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, फ़ोन स्टोरेज की बात हो रही थी, तो अगर ऐसे अब मेरी वीडियो स्टॉप हो जाया करे तो प्लीज़ उसका बुरा ना माना करें। एक्चुअली फ़ोन की स्टोरेज लगभग फुल सी हो रही है, बट उस पैरा को हम रिपीट कर रहे हैं। ये सेशन जस्ट उसके बाद लिया है मैंने, बिल्कुल। अब उसमें मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाया है। ये फिर से पढ़ते हैं। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friend with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. इस वाले पैरा में है कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं। ये मेरी मदर करती थी, उन्होंने एक लैंग्वेज बना रखी थी। उसमें साउंड्स नहीं थे, उसमें वर्ड्स थे, बट उसका एक सीक्रेट फॉर्मूला था जो मैं अब समझ चुका हूँ, बट आई विल नॉट टेल यू। ओके, तो जस्ट इट वाज एन एक्टिविटी, you may try it. It will be a great fun. Sleeping and walking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. Yes, like I think it's called hibernation. It's called hibernation. है ना? कुछ एनिमल्स जो हैं पूरे सीजन के लिए सो जाते हैं एंड फिर बाद में उठते हैं, काफी मंथ्स के बाद ही दिखाई देते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Yes. Where do you think they have gone? वो भी बस सोने गई होंगी। Now sloth. Okay, let's study about sloth. It looks like a bear, but it is not. It is a sloth. This is sloth. क्या है ये? Sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. हो गया, ये तो पेड़ खत्म कर रहा है। Sloths live for about 40 years. And in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. मतलब इनका तो ज़्यादा टाइम सोने में ही जाता है। ये आपका ये देखिए, अगर आप एक स्लॉथ का टाइम रूटीन देखें पूरे दिन का, तो ये टाइम है उसका स्लीपिंग और वॉकिंग का। ये देखिए, स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ 3/4 part of the day it is ये देखिए, it's up to how many hours, how many minutes? 45 minutes। अगर आप एक आवर में देखिए वैसे तो ये देखिए आपका 18 hours वो सोता है। एंड द लेफ्ट 24 minus 18 is I think it's 6, तो 6 hours ही वो अवेक रहता है, बाकी टाइम it is fall asleep. And how will you show the clock for a lizard house in winters? है विंटर्स के लिए अब आप इसको कलर करें लिजर्ड का, हमें करना होगा, बट हमें तो पता नहीं लिजर्ड कितने टाइम सोती है। ये आप कर सकते हैं।
Here given is the sleeping time of some animals below each picture. Write for how many hours a day that animals asleep. Okay. So a cow is fell asleep for only ये आपका 6 का ये इतना आपका 6 आवर्स हो जाता है इतना टाइम आपका. बट तो यहाँ पे अब हम इसको क्या शो करें भाई. 6 को हम 3 पोर्शंस में बांट सकते हैं. 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 के 2 4 6 तो a cow sleeps for 4 hours. यहाँ तो मैथ्स भी हो गई आपकी. A snake sleeps for 18 hours as a python. Giraffe sleeps for 2 hours and this, what is it? A cat sleeps for half of the day. What do you say, like 12 hours, है ना? 12 hours, yes, it's 12 hours. When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. So questions की list आपको बनानी आंसर में. Oh my god, tiger कितना cute लग रहा है but होता नहीं है. It's so dangerous. A tiger can see 6 times better at night than most of it humans. मतलब हमसे वो 6 देख सकता है. into 6 वो देख सकता है नाइट में ह्यूमन से. उसकी विजन. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. So जो टाइगर की whiskers होती है बहुत सेंसिटिव होती है. वो मूवमेंट्स और वाइब्रेशन जो एयर में होती है उसको फील कर लेते हैं. इस वजह से टाइगर जब डार्क में जाते हैं तो वो अपने प्रे को और इजीली ढूंढ पाते हैं. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of the leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tigers can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. देख लीजिए उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना मतलब अच्छा है ना. Now these two are left. Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. मतलब अगर जो टाइगर दहाड़ता है वो 3 किलोमीटर दूर तक हमें सुनाई देता है. Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. वही डॉग्स वाली थिंग आ गई इनमें. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. So it's very simple thing. The tiger is one of the most alert animals, and yet today tigers are in danger. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? Like उनका hunting बहुत हो रही है इसमें हम लिख सकते हैं. Can humans also be a threat to animals? How? Yes, because हम ही तो hunting कर रहे हैं. Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusks, rhinoceroses for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent off from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. The number of tigers and many other animals in our country is reducing.
there is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana Sanctuary in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. Okay, so okay, chapter आपका लगभग finished ही है. So where are other such national parks in India? Find out it. So like आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व is there in Uttarakhand. I am living here. Collect information on these and write a report. So report writing is told in the English video of an ice cream man part 2. If you haven't watched that video, just go and watch and then write a report of your own. What we have learned. Have you noticed that sometimes singers put hands on their ears when they sing? Why do you think they may be doing this? इससे better hearing होती है. Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. So sense of sight हमारी owl की और tigers की अच्छी है और hearing भी. Smell की sense dogs की अच्छी होती है. Now let's make a paper dog. So paper dog, it's very good activity. For this you need thick paper, pencil, scissors and sketch pen. Whoa, give your dog a name. So ऐसा dog आपका बनेगा. Name. So what is it? ये आपको दे रखी है विधि. Cut a long strip of thick paper. Mark the strip as shown here. So यहाँ पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रिप काटनी है. अब एक स्ट्रिप है ये आपकी. इस तरीके से इस पे मार्क्स बनाने हैं हमें. ओके. Make small cuts on the lines marked 1 to 6. So 1 to 6 ऐसे इसमें मार्क हो रखे हैं. इन पे आपको ऐसे छोटे छोटे कट लगा देने हैं. फिर hook together the cuts on the number 1 and 2. See picture A. So picture A आप देखें ऐसा है ना. आपको 1 और 2 को ये जो है एक साथ एक हुक में घुसाना है so that इसका मुंह बन जाए. हुक टुगेदर. सो नंबर 1 एंड 2 का जो ये आपने हुक बनाया है इसको ऐसे आप हुक कर देंगे. लाइक छोड़िए ये. आई विल डू इट इन अनदर वीडियो. किसी और वीडियो में मैं आपको जो है ये कर दिखा दूंगा. आई विल मेक इट. सो इस वाले पार्ट को तब कवर करेंगे एंड फिर एक लास्ट लेक्चर इसके क्वेश्चन आंसर्स का आई विल प्रिपेयर फॉर यू. टिल देन stay home, stay safe, take care of yourself. Like and share this video and subscribe to my channel. Thank you. Bye.